गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थे निश्चय लाइक कर। जो माने बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर अच्छ से माने को मो डिस्क्रिप्शन में दीटा को लिंक दे देबी कोर पेपर 1 एवं कोर पेपर 2 रो प्लेलिस्ट रो। कोर पेपर 1 ऑलरेडी मु कंप्लीट कर सारी। तो तुम मैंने जाकि डिस्क्रिप्शन में लिंक पाइबो से संपूर्ण टोटाल यूनिट 1 यूनिट 2 3 4 चार्टाक यूनिट आम सरी तुम देखी पार। ता छड़ा आमर यूनिट जो कोर पेपर 2 रो यूनिट 1 कंप्लीट होईची। यूनिट 2 रो बहुत शीघ्र काली भितर कंप्लीट हो। यूनिट 3 और यूनिट 4 मध्य आमे बहुत शीघ्र ही कंप्लीट करूँ। तो देख क्लास स्टार्ट करबा पूर्व तेणु समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को निहाती भाव सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थे निहाती भाव लाइक कर आउ शेयर कर जोड़ा कि मत आहरी इंस्पिरेशन कर नुआ नुआ वीडियो आने। तो देख क्लास स्टार्ट करवा। तो देख पॉपुलेशन इंटरैक्शन जानिबा पूर्व आम जदि केवल गोटे स्क्रीन ही आम सब जानीजा ठीक अच्छे। तो तुमको आउ अधिक कष्ट करने को पड़ोनी। ये गोटे जो स्क्रीन तुम देखिपुच यही जिनसा जब आम मन रखीदे ताहले आमको कौन प्रकार किसी भी कष्ट हेनी। देख मु गोटे देती प्लस गोटे माइनस आ गोटे हूँ जीरो। तार अर्थ अच्छी प्लस मान हूँ जी बेनिफिट दब है। ये प्लस अर्थ हूँ जी बेनिफिट दब ठीक अच्छे। ताको बेनिफिट जे दब है। एवं माइनस रो साइन अर्थ हूँ जी आमको कौन कर लॉस कर आम लॉस हम। एवं जीरो अच्छी नेदर बेनिफिट नॉर लॉस अर्थात किसी नहीं ठीक अच्छे। तो ये तीनटा साइन को प्रथम लिखी दिया। प्लस मान अच्छे बेनिफिट लाउ माइनस मान अच्छे लॉस दब एवं जीरो मान से बेनिफिट भी करनी कि लॉस भी करना ठीक अच्छे। तो देख मनकर आम जो जाना स्पेसीस ए आ बी दुईटा को नेबा तो म्यूचुआलिज्म मान कौन म्यूचुआलिज्म रो अर्थ हो विभिन्न प्रकार देख स्पेसीस मान भर जो से इंटराक्ट करती है अर्थात पॉपुलेशन मान भर जो प्रकार इंटराक्शन होता है ताकू आम विभिन्न भाग में विभक्त करि थाउ ठीक अच्छे। तो म्यूचुआलिज्म मान कौन जो जगार कि मनकर दुईटा स्पेसीस अच्छी ए आ बी तो ए कौन कर बी को बेनिफिट दब बी कौन कर ए को बेनिफिट दब ताकू कह जाए म्यूचुआलिज्म। तब देख कंपटीशन अर्थ कौन दी जन को लॉस करेंगे है अर्थात बी ए कौन कर बी क्षतिकारक बी मध्य ए क्षतिकारक। तब देख प्रीडासन माने कौन ए मनकर बेनिफिट पाइब किंतु बी कौन हम से तार लॉस हम ठीक अच्छे। ये बेनिफिट पाइब ये कौन हम लॉस हम ठीक अच्छे। ताहले प्रीडासन अर्थात कौन हम ए कौन कर बी को अटैक कर खाद्य रूप ग्रहण करने अर्थात ये को अटैक कर खाद्य रूप ग्रहण करने तेणु जेहेतु ए अटैक कला बी को प्रीडासन बोली कहगला। तब देख पारासिटिज्म माने कौन से एका जिनस ये किंतु पारासिटिज्म प्रीडासन भितर टिके डिफरेंट अच्छे। देख प्रीडासन कौन से डायरेक्ट अटैक करके खाइला किंतु पारासिटिज्म रे कौन हम ए कौन कर बी ठारू खाद्य रूपे ग्रहण कर केमती बी रो बॉडी रे रहीकिना आउटसाइड रहू बा इनसाइड रहू बॉडी भितर रहिबो एवं संपूर्ण भाव बी को से कौन कर तार डेथ रो कज हेबो नहीं है से कौन कर से ताकू धीरे 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 ताटू खाद्य रूपे ग्रहण करिवो एवं ताकू क्षति करिवो किंतु डेथ करिवो नहीं है नॉट डाई है अर्थात बी कौन हम से डेथ हेबो नहीं से केवल धीरे 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 तार क्षति हेबो एवं से ए को खाद्य जोगेइबो है एवं से प्रकार कौन हम तार हुए तो परवर्ती मुहूर्त तार डेथ होता पारे कि सांगे सांगे डेथ हम ना है किंतु प्रीडासन मान कौन इमिडिएटली बी रो डेथ है दुईटा भितर डिफरेंस कौन बुझीगल। तार देख कमेंसालिज्म मान कौन ए तो बी ठारू फायदा पाइब किंतु ए बी ठारू फायदा पाइले मध्य बी किसी फायदा पाइबनी किंतु तार किसी क्षति भी हेब नहीं है। तो बी रो कौन प्रकार फायदा पाइबनी से क्षति हेब नहीं किंतु बी कौन कर ए को फायदा दब। सेमती आमेनसालिज्म माने कौन ए रो क्षति ही हम है देख ए रो क्षति हम ये जगार ठीक अच्छे एवं बी रो कौन हम ना ही क्षति हम ना ही लाभ हम ठीक अच्छे। ये ये दुई जन कौन प्रकार दुई जन कहीं क्या लाभ पाइबे नहीं किंतु ये ए कौन हम बी ठारू क्षति पाइब
किंतु बी रो ना क्षति हेबो ना लाभ हेबो जदि ए जिनिस को आम माइंड रखीदेबा ताहले आम जहाँ भी पढ़ा आमको इजी हेबो जानिबा पई ठीक अछि। तो देख क्लास स्टार्ट करबा। देख पॉपुलेशन इंटरेक्शन माने कोन देख पॉपुलेशन इंटरेक्शन अकर्स एट टू डिफरेंट लेवल गोटे होची इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और होची इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो प्रथम आम देखबा इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन कोन देख इट इज द इंटरेक्शन एमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसीज जो जगार समान समान स्पेसीज भितर यदि किसी गोटे तांको भितर यदि इंटरेक्शन है ताको आम इंट्रास्पेसिफिक कहबा अर्थात सेम स्पेसीज है अर्थात मनकर बाघर बाघ सहित कंपिटिशन हम कि मनीषर मनीष सहित कंपिटिशन हम अर्थात सेम स्पेसीज रे जदि तांकर भितर इंटरेक्शन है ताको कह इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो केमती हम ये मतलब विभिन्न प्रकार अच्छी। प्रथम आम देखा कॉलोनाइजेशन कौन सम प्रोटोजोआन एंड मेटाजोआन लाइक निडेरियन फॉर्म कॉलोनी अर्थात मैंने कौन करती ए गोटे जगार माने से कॉलोनी हिसाब से बसवास करती कहुए कॉलोनाइजेशन। सेम देख एग्रीगेशन माने कौन मेनी एनिमल्स लिव इन ग्रुप टेम्पोरारीली और लेस परमानेंटली अर्थात से कौन करती टेम्पोरारीली गोटे जगह ग्रुप होकर बसवास करती किंतु परमानेंटली बहुत कम मात्रा से माने बसवास करती है एग्रीगेशन हम। तो देख अल्ट्रुइज्म माने कौन अल्ट्रुइज्म इज द बिहेवियर वेयर बाय an individual increase the welfare of another individual at the expense of its ओन वेलफेयर है तार कौन अल्ट्रुइज्म माने कौन बिहेवियर वेयर बाय एन इंडिविजुअल इंक्रीज द वेलफेयर तार इंक्रीज हम ऑफ एनदर आउ जनकर से कौन कर वेलफेयर को से इंक्रीज कर एवं एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन वेलफेयर तार निजर जो वेलफेयर को से एक्सपेंस कर से तार हरइब एवं आउ जनकर वेलफेयर को से कौन कर इंक्रीज करने से चेष्टा कर ठीक अच्छे से सेम स्पेसीज रे है। देखो डोमिनेंस हायरार्ची माने कौन मोस्ट ऑफ द स्ट्रंगर सोशल एनिमल डोमिनेट ओवर वीकर वन अर्थात मनकर सेम स्पेसीज रे आमे मध्य जानिछु कि सेम स्पेसीज रे गोटे जीव कौन करबा आ गोटे जीव उपर कौन हो से तार डोमिनेट होना रही आम मनीष मान क्षेत्र में भी देखू मनकर घरे मनकर गोटे परिवार विभिन्न प्रकार मेम्बर अच्छा मेम्बर भितर जड़े डोमिनेट थे जड़े कौन हो सप्रेस होना रही अर्थात से कौन हो से तार माने तार निजस्व किसी न थाए ठीक अच्छे कहुए डोमिनेंस हायरार्ची। तापर कम्युनिकेशन माने कौन एनिमल्स कम्युनिकेट थ्रू केमिकल सिग्नल जमती कि फेरोमोन द्वारा तुम यहाँ प्रीवियसली भी तुमको कहुई जे केमिकल सिग्नल द्वारा जो मैंने एक सहित जो कम्युनिकेट करते फेरोमोन हार्मोन द्वारा ही से कम्युनिकेट करते जोटा कोर पेपर माने मु तुमको पारासिटिक एडाप्टेशन में बुझे है। तो देख टैक्टाइल सिग्नल अर्थात छुईकी विजुअल सिग्नल मतलब देखिकी टॉडिटरी सिग्नल देख इलेक्ट्रिक सिग्नल यही प्रकार से कम्युनिकेशन करिथांती है। तो अर्थात से विभिन्न प्रकार कम्युनिकेशन माध्यम सब थाए किए केमिकल सिग्नल द्वारा कम्युनिकेट करथाए किए छुईकिना किए देखिकी किए शुणिकी बा किए इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा अर्थात विद्युत तरंग द्वारा मध्य से कम्युनिकेट करिथांती। तो देख कार्निवालिज्म कौन कार्निवालिज्म होची एन एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ इट्स ओन स्पेसीज तार निजर सेम स्पेसीज रो जीवजंतु को जे खाद्य रूपे ग्रहण करे ताको कार्निवालिज्म कहुए है कहुए कार्निवालिज्म। तो यही वर्डटा को निहाती भाव में मन रखिथिबो हे तो परीक्षा पड़ी पारे जे जी ओन स्पेसीज को तार खाद्य रूपे ग्रहण करे ताको कौन कहुए कहुए कार्निवालिज्म। तापर देख इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन विषय में देखा एटा तो इंट्रास्पेसिफिक तुम जान लो। तो इंटरस्पेसिफिक कौन तार विपरीत हम जो थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज मान भितर जो इंटरेक्शन होता है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बोली कहा जाए। देख interaction between member of different species are called interspecific interaction. These arise on account of organism primary need of life that is food reproduction and protection। तो बेसिकली प्राइमरी नीड आम माने मनीष मानकर कौन कौन प्राइमरी नीड अच्छी फूड हो बा रिप्रोडक्शन हो बा प्रोटेक्शन हो यही मानक पई अलग अलग स्पेसीज भितर कंपटीशन होता है किंबा तांकर इंटरेक्शन होता है। तब देखो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मे इन्वॉल्व मेनी स्पेसीज दीज इंक्लूड फूड चेन किंबा फूड वेब ताको आम प्रीवियस क्लास तुम यूनिट 1 तुम फूड चेन कौन फूड वेब कौन
बुझीच तो फूड चेन और फूड वेब जब तुम जानी से तुम ताले इंटरस्पेसिफिक इंटराक्शन रो मीनिंग कौन तुम संपूर्ण भाव में बुझीज देखो द इंटराक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ टू स्पेसीज मे बी देखो पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटराक्शन होता है तो पॉजिटिव बा बेनिफिशियल इंटराक्शन कौन इन सच एन इंटराक्शन इदर वन और बोथ द इंटराक्शन स्पेसीज आर बेनिफिट है अर्थात देखो हुए तो जमी तुमको प्रिवियस बुझे मु ए अच्छी बी अच्छी है ए भी बेनिफिट पाइब बी भी बेनिफिट पाइब किंबा ए बेनिफिट पाइब बी रो किसी क्षति हम ना किंबा ए रो किसी क्षति हेनी बी रो माने लाभ हम बा बेनिफिट पाइब अर्थात पॉजिटिव रे जे थिबो हला केवल बेनिफिट ही बेनिफिट पाइब कौन प्रकार क्षति हम ना है तो ताको कह पॉजिटिव और बेनिफिट बेनिफिशियल इंटराक्शन तो जो एग्जांपल गुडा देली जोटा गोटे हूँ कॉमनसेलिज्म होता है प्रोटो कोऑपरेशन होता है पारे म्यूचुअलिज्म हो पारे किंबा सिम्बायोसिस कह जाए म्यूचुअलिज्म को अदरवाइज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कह जाए है तो ये कौन है से माने के का क्षति करेंगे ना केवल लाभ करेंगे किंबा किसी भी लाभ न कले भी कि क्षति करेंगे ना है तापर देखो नेगेटिव कौन अर्थात क्षति करेंगे जो मैंने एंटागोनिस्टिक बोली कह जाए तो ये कौन होता है इन सच एन इंटरैक्शन वन स्पेसीज इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज डायरेक्टली हार्म जोड़ा हूँ प्रिडेशन होता पारे किंबा कंपटीशन होता पारे तापर देखो पारासिटिज्म होता पारे बा एंटीबायोसिस होता पारे ठीक अच्छे सेमती 3 नंबर हूँ न्यूट्रल है न्यूट्रल मैंने कौन नाइदर बेनिफिट नॉट हार्म है अर्थात देखो इन सच एन इंटरैक्शन जोड़ा हूँ कौन नाइदर ऑफ द टू पार्टनर इज बेनिफिटेड नॉर हार्म तो 3 प्रकार जान लो गोटे थे बेनिफिट थे पॉजिटिव गोटे थे लॉस देते ताको नेगेटिव कह जाए आ न्यूट्रल होचे जो थे ना बेनिफिट दिए ना लॉस दिए एक तुम मन रखी दियो तब देखो न्यूट्रालिज्म कौन टे बुझा जोटा एबे टिके आगु आम बुझे न्यूट्रालिज्म कौन बेनिफिट भी देव ना बा क्षति भी करिवो नाही है न्यूट्रालिज्म डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज व्हिच इंटरैक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर है तो अर्थात डू नॉट अफेक्ट ईच अदर को तुम अंडरलाइन करके लिखिपार ठीक अच्छे इट डिस्क्राइब इंटरैक्शन वेयर द fitness of one species has absolute no effect whatever on that of the other. The more presence of two species should not directly affect the population level of the other. True neutralism is, however, extremely unlikely or even impossible to prove. When dealing with the complex network of interaction presented by ecosystem, one cannot assert positively that there is absolutely no competition between or benefit to either species. Since true neutralism is rare और नॉन एक्जिस्टेंस अर्थात यहाँ आम बहुत कम कहीं यार भर आम किसी आम प्रमाण पाइपारूनु जे जड़े जन को दुई जन एक संगे रही से एक अन्य को ना क्षति करुँच ना लाभ दौरान तो यहाँ बहुत रेयर बा नॉट एक्जिस्टेंस आम देखा मिले है इट्स यूजेज इज ऑफन एक्सटेंडेड टू सिचुएशन where interaction are merely insignificant or negligible. For example, है ये गोटे एग्जांपल देखिए आम For example, robin and squirrel live in a forest present a good example of neutralism as neither serves as a food for the other and neither has any direct interaction. Say both may inhabit the same tree yet both are clearly a part of the forest community. अर्थात गोटे फॉरेस्ट रे बा गोटे कम्युनिटी रे आमे देखा गले मनकर गोटे गछरे रबिन हो बा स्क्वारेल हो एका संगे बसवास करती ना से माने एक अन्य को खाद्य पई सहाय्य करती बेनिफिट करती ना क्षति करती ताले एटा आमे गोटे एग्जांपल नै परबा न्यूट्रलिज्म रो आमे एग्जांपल नै परबा ठीक अछि रबिन और स्क्वारेल को ठीक अछि तापर देखो कमेंसलिज्म कोन
देखो commensalism is defined as the coaction in which two or more species are mutually associated in activities centered on food and one species at least derive benefit from the association अर्थात दी जन एका संगे रहिले एवं एटलिस्ट जणे कौन करब बेनिफिट पाइब ठीक अच्छे यही एसोसिएशन रू है व्हाइल द अदर स्पेसीज इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म ताले एटा को मन रखी तो अर्थात कौन हम एटी आम कौन बुझिले प्लस आउ जीरो जोटा आम फास्ट पढ़ी प्लस आउ जीरो है तार कौन जड़े बेनिफिट पाइला आउ जड़े किंतु है नाइदर बेनिफिट पाइला नॉर हार्म है ठीक अच्छे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनसालिज्म हैज बीन ब्रॉडेन in recent year to apply a co-action other than those centered on the food, cover, support, protection and locomotion are now frequently included. तो आम कि देखा कॉमनसालिज्म देखा कंटिन्यूअस कांटेक्ट रे देखा आम है कॉमनसालिज्म इन मोर और लेस परमानेंट कांटेक्ट विथ देयर होस्ट एंड रिप्रेजेंट बाय ग्रेट भेराइटी इन बोथ एनिमल एंड प्लांट किंगडम तो देखा आम एनिमल मान कि देखा कॉमनसालिज्म एग्जांपल है देख सम एक्टो commensal animal are associated with other animal are purpose of encourage and protection example देखो remora fish attach themselves on the shark है तार देखो sword fish barracuda or sea turtle etc by means of the highly modified dorsal fin they are small in size but and not burdensome of the host अर्थात एमाने कौन होती ये जो रेमोरा फिश अच्छी ये कौन निज को अलग फिश मान बॉडी कौन है अटैच करके रखी थाए छोट फिश अच्छी से अटैच करके रखे है द होस्ट बेनिफिट ऑफ द रेमोरा हाउएवर फॉर व्हेन द होस्ट फीड the scarp of the food coat floating back and swept by the remora तो तार बेनिफिट कौन है जिते बड़ बड़ माछ मैंने जो भी खाद्य रूपे ग्रहण करती तार किछिटा अंश ये रेमोरा फिश मैंने ग्रहण करि थांती ठीक अच्छे तापर आउ गोटे आम एग्जांपल देखा एनिमल इनसाइड एनिमल देखा मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक अप रेसिडेंस विदिन द टिश्यू और कैविटी ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी ट्रबल टू द ओनर बट विदाउट पेइंग एनी रेंट है तार कौन देख फास्ट आम कौन बुझे फास्ट बुझे जे यही जगार कौन अच्छी एनिमल ऑन द एनिमल माने कौन एनिमल आउटसाइड रे गोटे गोटे बड़ एनिमल अच्छी तार आउटसाइड ये रहिला ठीक अच्छे एवं ये जहाँ खाद्य रूपे ग्रहण कला तार किछिटा अंश ये मध्य खाद्य रूपे ग्रहण कले है कमेंसालिज्म कह जाए तापर भितरे आम देखा गोटे यहाँ बड़ एनिमल अच्छी ता भितरे एनिमल रहिबो ठीक अच्छे तो एक आम पारासिटिज्म कहीपर ना कहीं ये जो भितरे जो रुहे ये कौन क्षति करे ना ठीक अच्छे तो ये कौन कर तार किछिटा एग्जांपल देखो आम देख द पी क्राब जदि आम देखा लिव आज commensal in a mental cavity of certain sea mussel है the crab steal food collected by the large mussel but does not give any injury से कौन करे ये क्राब कौन करे ये मसल ठारू खाद्य ग्रहण करे किंतु ताको कौन प्रकार क्षति करे ना ठीक अच्छे सिमिलरली मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द लोअर इंटेस्टाइन ऑफ द देयर होस्ट where they consume undigested food and secrete and complete their life cycle without the notice of their host अर्थात होस्ट रो इंटेस्टाइन रहिले एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने खाद्य रूपे किसी ग्रहण कले किंतु होस्ट को कौन प्रकार क्षति करिले नाही ताको हमें कमेंसालिज्म बोली कहबा तापर देखो कमेंसालिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कांटेक्ट है तो देखो विदाउट कंटिन्यूअस कांटेक्ट कौन द कैटेगरी ऑफ commensal that are in the temporary contact with their host or that are associated without being in any contact is also quite common तार एग्जांपल देखा
अर्थात एमाने कंटिन्यूअसली गोटे होस्ट भितर रहिबे नाही बाय डिफॉल्ट किछि टाइम पय समाने रहि पारंती ठीक अछि तो एग्जांपल होछि देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रॉपिकल फिश फायरस्फेयर व्हिच find shelter within the cloacal cavity of the sea cucumber है तो जो सी कुकुम्बर अच्छी तार क्लोएकाल कैविटीज अच्छी ता भितरे यही प्रकार फिश माने रहंती तो द फिश occasionally emerge to the feed in the neighborhood when it wishes to re-enter its strange retreat. It poke in nose against the opening of the cucumber cloaca when quickly reverse its position and allow itself to be drawn tail fast inside the host. तो एमान कहते होस्ट भितर जो इच्छा हुए से प्रवेश करती एवं खाद्य से ग्रहण करती कि जब इच्छा न थाए ताले होस्ट देहरे परमानेंटली रुहंती नहीं है देखो प्रोटोकोपरेशन कौन आम देखा देखो प्रोटोकोपरेशन कौन इज लेस एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ interaction than mutualism in which the interaction is clearly beneficial to both species allow the equilibrium population level of both of the higher than their otherwise could be. However, it is not obligatory for either species. अर्थात कौन करती एमान जो एक अन्य सहित जो स्पेसीज माने इंटराक्ट करती एमाने एक अन्य कौन बेनिफिट दे थांती ठीक अच्छी तो ये प्रकार को प्रोटो कोऑपरेशन बोली कहा जाए फॉर एग्जांपल देखबा हमें देखो the relationship between water moccasin and large birds such as herons and ibises on several islands of the west coast of Florida provide a good example of proto-cooperation. The bird nest in the lower branches of relatively unprotected trees while the snake congregate around the base. These protect the birds from the tree climbing predators such as raccoons. In turn, the snake feed in part on fish dropped by the birds and the occasional baby birds that fall out of the nest. तो मैंने कौन यही जो बार्ड्स अच्छी ये मनकर गछ उपरे एटा मनकर गछ अच्छी गछ उपरे से बार्ड कौन तार बसा करके रहिला गछर तल पटे कौन हुए साप रहिला है तो साप जदि गछर तले रहिला ये बार्ड्स को अलग शत्रु मैंने आसिक आटाक करवाटा मुस्किल हो जाए कहीं तले साप अच्छी तो ये लाभ देला किंतु ता बदल बार्ड्स कौन करे से जो तार खाद्य जो ग्रहण करे मनकर माछ आनिकिना खाइला कि जहाँ भी खाइला सेटा मनकर बाय डिफॉल्ट जो तले पड़गला ताको साप खाद्य रूपे ग्रहण करे आउ मत कौन बार्ड्स जो छोट छोट छुआ गुड़ाक जदि गछ जो बसार जदि खसी पड़े ताको साप खाद्य रूपे ग्रहण करें ठीक अच्छे तापर देखिए आम म्यूचुअलिज्म कौन आम बुझा Mutualism can be defined as a relationship between two or more species that benefit all parties of the relationship or a symbiotic relationship in which both member benefit अर्थात दीजन को बेनिफिट देबे हैला neither can survive without the other अर्थात एमाने एमिति भाबरे बसवास करंती जे एक अन्य बिना सेमाने रही पारिबे नाही सेमानकर स्थिति नाही हैला ताले सेमाने कोन करबे एक अन्य सहित ही सेमाने आटाच हेकि रहिबे एवं बेनिफिट देबे ताले आमे देखिबा तार एग्जांपल देखिबा प्रथम देखिबा विथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट रे देखिबा द मोस्ट इंटीमेट टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इज सीन इन दोज एसोसिएशन इन व्हिच द कांटेक्ट बिटवीन द सिम्बायंट इज क्लोज एंड इज ऑफन परमानेंट एज वेल एज ऑब्लिगेटरी वेरियस डिग्री ऑफ कांटेक्ट मे बी एस्टाब्लिश बाय द म्यूचुअल सिम्बायंट्स तो देखो जोड़ा हूँ प्योरली एक्सटर्नाल देख एक्सटर्नाली से म्यूचुअलिज्म रे को जीवजंतु रहते देखा इन दिस टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म द एनिमल आर इन परमानेंट कांटेक्ट बट द कांटेक्ट इज प्योरली एक्सटर्नाल जदि आम यही एग्जांपल देखिपर है
जोटी तुम देख सी एनेमन है से आटाच करके निजक रखी क्या सहित देख हर्मिट क्राब सहित से निजक आटाच करके रखी ठीक अच्छे तो कौन से मैंने एक अन्यर बाहर पटे ही आटाच कर ठीक अच्छे तुम एग्जांपल देखिपार तो ये देख गोटे एग्जांपल देख जो मैं कहली द क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप अंडर द सी इज furnished by the sea anemone है which grow on the shell of the hermit crab है the hermit crab starts the enterprise by obtaining a sea anemone from a rock and placing it on the back of its shell. The stinging nematocysts of the sea anemone are a powerful deterrent to predaceous fish and protect the member of the partnership from being eaten. It in the other hand gain food particles from the hermit crab है तो सी एनेमन कौन करे हर्मिट क्राब रो सेल भितर निजको बा जो खोलपा अच्छी जो कठिन खोलपा अच्छी ता भितर से रहिला जहा द्वारा से कौन हुए शत्रु निजको रक्षा करि पारे किंतु ता बदला सी एनेमन कौन करबो हर्मिट क्राब को खाद्य रूपे से फूड पार्टिकल्स मध्ये जोगाई थाए ठीक अछि thus the both species are benefited in the relationship when the growth of the crab causes it to move to the large cell of the crab loosen the base of the anemone which it close and transfer it to the new cell है तापर जिते बड़े ताको मनकर से धीरे धीरे तार ग्रोथ है बढ़िला से तो ताको गोटे कौन करबो गोटे बड़ सेल दरकार ताले से बड़ क्राफ्टा कौन बड़ सेल पाकू ट्रांसफर हो जिवो ठीक अछि तो यहाँ हूँ तार गोटे एग्जांपल तापर देखो बाय यूटिलाइजिंग द कैविटीज ऑफ द होस्ट तो देखो सम एनिमल्स इन रिसाइड इन द कैविटी ऑफ द होस्ट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअलिज्म केमिति थे फॉर एग्जांपल देखो जू जांथेला आर फाउंड एबुडेंटली इन द बॉडी वॉल ऑफ द कोराल पोलाइप्स तो यहाँ गोटे एग्जांपल देखा आम कोराल पोलाइप्स रो बॉडी भितर जू जांथेला कौन हुए बसवास करे दिज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सर्व द यूजफुल फंक्शन ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजेनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कोराल एंड प्रोवाइडिंग इट विथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस as a byproduct of the photosynthesis है तापर देखो द जू जांथेला इन टर्न बेनिफिट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेटाबोलाइट containing nitrogen and phosphorus which are scarce in tropical water as well as by the absorption of carbon dioxide resulting from the catabolic process of the coral animal तो दुई जन को एई प्रकार बेनिफिट देई थांती है तापर देखो म्यूचुअलिज्म विदाउट कंटिन्यूअस कांटेक्ट रे देखबा हमें a great many instances exist of mutualism in which the partner are not attached to each or in which they are in contact immediately intermediately or for only a short period. In most mutual benefit association of this sort of fulfillment of a nutritional need play a prominent role for the least one of species but the other species and sometimes both may derive entirely different type of advantage तो एगुड़ा किछिटा एग्जांपल थिला तापर Amensalism कौन हमें बुझबा Amensalism is a relationship in which a product of one organism has a negative effect on the other organism अर्थात एथिरे कौन हबो जने नेगेटिव अर्थात माइनस रे थिबो हैला इट इज स्पेशली ए पॉपुलेशन interaction in which one organism is harmed while the other is neither affect nor benefit अर्थात जने तो लॉस रे गला आउ जने जीरो अर्थात ये नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म है तो यही प्रकार तांकर रिलेशनशिप रहिबो ठीक अछि तो बहुत छुआ मन कमेंसालिज्म और आमेनसालिज्म भितर डिफरेंस थाए ताले एटा आमेनसालिज्म रो डिफरेंस कोन जने बेनिफिट पाइला ए सॉरी जने लॉस हैला आउ जन ना बेनिफिट पाइला ना लॉस हैला ठीक अछि तब देखो
one population definitely inhabit the other while remaining unaffected itself. By some modifying the environment, the organism improve its own change of survival. Usually this occurs when one organism excludes a chemical compound as a part of its normal metabolism that is detrimental to another organism. Such chemical released by one species which act on the other growth, health, and behavior of the another species are called allelochemicals. Allelochemicals effect on are of three general sorts: एलोमोन्स, काइरोमोन्स आउ डिप्रेजेंट. तो देख तार अर्थ कौन मुझे आउट थे बुझे दूसरी. देख किसी केमिकाल कौन करता केमिकाल थाए है सेटा कौन करे रिलीज करे है गोटे स्पेसीस रु तापर सेटा कौन करे अलग एक्ट करे आउ जनक ग्रोथ रे किंबा हेल्थ रे किंबा बिहेवियर रे से कौन करे एक्ट करिथिबो है तो ताकू कह जाए एलेलो केमिकाल बोली कह जाए. तो एलेलो केमिकाल इफेक्टटा बेसिकली तीनटा सोर्स रे हिताए. गोटे होची एलोमोन्स, गोटे होची काइरोमोन्स आ गोटे डिप्रेजेंट. तापर देखो पारासिटिज्म कौन. द टर्म पारासिटिज्म मे बी डिफाइंड एज जोटा कि आम प्रीवियस ऑलरेडी पारासिटिज्म कौन आम जानीचु a two species associated in which one species of the parasite live on or in है बाहर किंबा भितर ए सेकेंड स्पेसीज द होस्ट. तो जी जहाँ देहरे रुहे ताको तो कह जाए जहाँ देहरे रुहे ताको तो कह जाए होस्ट एवं जी रुहे ताको कह जाए पारासिट है फॉर ए सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ इट्स लाइफ एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम इट. तो सेठू से तार रहिबो एवं तार खाद्य मध्य से ग्रहण करिथाए है. This definition of parasitism emphasizes several important features on the host parasite relationship. जोटा कि आमे कोर पेपर 1 रे ऑलरेडी आमे पढ़ी सारिचु जे पारासाइटिक रिलेशनशिप केमिति थाए एवं से माने केमिति बेनिफिट पाई थांती. तो केतेटा पॉइंट ता भीतर डिस्कशन करबा आमे देखो. तो देखो फास्ट पॉइंट कौन दीजिए पारासिटिज्म ऑलवेज इन्वॉल्व टू स्पेसीज द पारासाइट एंड द होस्ट है. सेकेंड होची मेनी ऑफ दिज पारासाइटिक एसोसिएशन प्रोड्यूस pathological changes in the host that may result in disease. एटा मध्य हमें पढ़ीचु. तापर थर्ड देखिबा the parasite is always the beneficiary and host is always the provider in any host parasitic relationship. तो ये कौन होस्ट सब प्रोवाइड ही करी थाए है ना एवं पारासाइट सब बेनिफिट रे थाए. तो देखो parasitism is thus negative interaction in which one species is harmed while the another is benefit. There is no major taxonomic group that has no parasitism associated with it. Only viruses have no parasite है ना. तब देखो kind of parasite कौन केते प्रकार हमें देखिबा. तो हूँ गोटे हूँ एक्टोपारासाइट कौन आ एंडोपारासाइट कौन आम जाना. पारासाइट व्हिच लिव ऑन द सरफेस ऑफ द देयर होस्ट आर कॉल्ड एक्टोपारासाइट. जदि लाइस, आइसोपोड, मोनोजेनियन, फ्लूक एगुड़ा कौन जी बॉडी सरफेस रे रुहंती अर्थात आउटसाइड द बॉडी रुहंती तेणु ताको कह जाए एक्टोपारासाइट है. तापर देखो आउ कौन दीजिए मेनी क्रुस्टासियन where is parasite which are found in the tissue of the host are called endoparasite. अर्थात होस्ट बॉडी भितर थिले ताको एंडोपारासाइट कह जाए. जेमति कि नेमाटोड, राउंड वर्म सजे पिन वर्म है. तापर देखो टेप वर्म है. तापर देखो फ्लूक है आम फ्लूक विषय पढ़ीचु. मैलेरियल पारासाइट भर्टिब्रेट पाखे आम पढ़ीचु. प्लाज्मोडियम भाइवाक्स है एटा ऑलरेडी आम पढ़ी सारीचु. तापर देखो एंटामोeba हिस्टोलिटिका ता विषय भी आम पढ़ीचु है. एंड मैलेरियल पारासाइट ऑफ द वर्टिब्रेट. एंडोपारासाइट कैन एग्जिस्ट इन वन और टू फॉर्म जोटा जी इंटरसेलुलर पारासाइट हो पारे है आ गए इंट्रासेलुलर पारासाइट है. इंटरसेलुलर कौन इनहेबिटिंग स्पेस इन द होस्ट बॉडी आ इंट्रासेलुलर कौन इनहेबिटिंग सेल इन द होस्ट बॉडी. अर्थात सेल होस्ट जदि सेल रही इंट्रासेलुलर कह केवल से सेल न रही केवल होस्ट बॉडी भीतर रही इंटरसेलुलर पारासाइट बोली कह जाए.
तापर देखो प्रिडेशन माने कोन द टर्म प्रिडेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब an interaction between population in which one organism is predator है जे हंट करी थाए हंटिंग करी थाए फीड ऑन द प्रे है एनिमल दैट इज अटैक जहाँ को अटैक करी थाए है टिपिकली द प्रिडेटर कैच kill and eat its prey, but predation is sometimes also used to describe feeding by insectivorous plant and even grazing by herbivores है the term predation is however more commonly associated with the idea of strong attack or attacking the weak like the tiger poaching on the deer है तो टाइगर जो डियर उपर अटैक करे टाइगर को कहला प्रिडेटर डियर को कहला प्रे है द हॉक ऑन द स्पैरो द फ्रॉग ऑन द इंसेक्ट तो युवा सब कौन प्रिडेशन रो एग्जांपल In natural communities, predation is a step in the transfer of energy. It is a negative interaction which results in negative effect on the growth and survival of one of the two species population. From the viewpoint of the community ecology, predation is important in very many ways and has definite role to play in food coaction अर्थात ये कौन गोटे जो आम जो इकोलोजी रे प्रिडेशन बहुत भूमिका गुरुत्वपूर्ण कहीं आम फूड चेन फूड वेब आम अलरेडी पढ़ीचु जे से केमी एक अन्य खाद्य उपर निर्भर करती ठीक अच्छे अब देखो प्रोडक्टिविटी एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज प्रिडेशन for example may help increase the biodiversity of the community by preventing a single species from becoming dominant. Such predators are known as keystone species and may have a profound influence on the balance of the organism in a particular ecosystem. Introduction or removal of this predator or change in its population density can have drastic cascading effect on the equilibrium of many other population in the ecosystem. तब देखा जेनेरालाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड प्रिडेटर माने कौन बाय देयर हंटिंग एक्टिविटी प्रिडेटर्स कैन बी रिगार्डेड एज द स्पेशलाइज्ड और जेनेरालाइज्ड देखो स्पेशलाइज्ड प्रिडेशन कौन आम देखा जो देखो आर दोज अडाप्टेड टू हंट ओनली ए फ्यू स्पेसीज है अल्प किसी स्पेसीज को से माने आडाप्टेड कर हंट करने स्पेशलाइज्ड प्रिडेटर बोली कहा जाए दे आर फोर्स टू मूव वेयर द vulnerability of a staple prey items drop to the point where the prey population cannot support itself है for example देखो पेयर falcon show a marked preference for dog and pheasant से देखो generalized predator माने कौन देखिबा not so restricted in diet adjust to other food source for example the horned owl and the butted hawk have a large range of collective प्रे अवेलेबल अर्थात मैंने जहाँ को पारती मैंने खाद्य रूपे ग्रहण करने पछाती ना है फॉक्सेस कैन बी शिफ्ट टू वेजिटेबल एंड कैरियन डाइट शुड कंडीशन रिक्वायर इट है अर्थात फॉक्स कौन करे से वेजिटेबल उपर खाद्य ग्रहण करें देखिए आम कंपटीशन कौन The most agreeable and simple definition of competition is the one put forth by Clement and the Selford है जे कि क्लेमेंट और सेल्फोर्ड कौन थे कंपटीशन उपरे से माने 1939 रे से माने कहिथिले है according to them the competition is कौन competition कौन देखा the active demand by two or more individual of the same species population जो जगह रे or two or more species
एट द सेम ट्रॉपिक लेवल अर्थात गोटे सेम ट्रॉपिक लेवल दी जन को भितर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन आम कहीपर कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहीपर अर्थात सेम मनकर सेम स्पेसीस थी ए मनकर स्पेसीस ए आउ स्पेसीस बी भितर कंपटीशन होता है है कि स्पेसीस ए सहित स्पेसीस ए रो कंपटीशन होता है अर्थात इंटरस्पेसिफिक इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन होता है ठीक अच्छे फॉर ए कॉमन सोर्स रिसोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट दैट इज एक्चुअली फॉर पोटेंशियली लिमिटिंग अर्थात आम मनकर खाद्यपाई से एक अन्य सहित कंपटीशन हो पारती कि सेल्टर एक अन्य सहित कंपटीशन हो पारती तो ताको आम कहबा कंपटीशन बोली कहि परिबा Individual of the same species have very similar requirement for survival, growth and reproduction, but their combined demand for the resource may exist the immediate supply. This lead to competition for the said resource between the member of the same species and is termed as intraspecific competition ताको कह दे interspecific competition देखो interspecific competition is a form of competition in which individual of the different species compete for the same resource in the ecosystem example देखबा food हो बा living space हो हैला अर्थात आम जदि देखबा डियर तो डियर को मन कर लायन भी अटैक करिवो टाइगर भी अटैक करिवो तो एठाले कौन लायन अटैक आउ टाइगर भितर कौन है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है ठीक अच्छे तो व्हेन देयर कंबाइंड डिमांड फॉर द रिसोर्स एक्सीड द इमीडिएट सप्लाई तो देखो यहाँ टोटल जहाँ भी मुझे कहली पॉपुलेशन इंटराक्शन टोटाल आम पढ़ले आ सबुठ इम्पोर्टाट हूँ तुमको ये फास्ट स्लाइड टाक निहाती भाव में मन रखार अच्छी जदि आम फास्ट स्लाइड टाक संपूर्ण भाव में मन रखीदेवा ताहले हमको एगुड़ा सब बुझापी इजी हम आउे जो एग्जाम्पल अच्छी एग्जाम्पल गुड़ाक आम मन रखिपर तो आज तो ये आशा रखुच्छी तुमको वीडियो पसंद आसो नेक्स्ट क्लास अधिक पढ़ा थैंक यू।